हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल फुटबॉल ब्लडी हेल। एंड आज हमारे साथ में तो गोट, मतलब मैं तो मानता हूँ हमेशा आदित्य को, आदित्य रेड्स हिमसेल्फ। आदित्य यार, मतलब वी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हम लोग ने बात नहीं किया है, मिले नहीं है। आई थिंक वी गो लॉन्ग बैक। मैं Yeah, हम लोग कितने साल से अब जानते हैं, आई डोंट इवन रिमेम्बर, लाइक 15 ईयर्स तो हो गया होगा। आई थिंक वी नो ईच अदर। आराम वो से रूनी बाइसाइकिल किक को कितना साल हो गया? 2011 मतलब 2010 2011 और हाँ, तो आई थिंक 2012। 13 इयर्स। यार, जो जो नए लोग देख रहे हैं, पहले तो वेलकम बैक कार्तिक ऑल्सो। क्या हाल है? ऑडियो चेक हेलो। कर लेता हूँ तेरा, सब बराबर? हाँ, ऑल गुड। तो ऑल गुड ऑल यार, गुड। आदित्य, मैं तेरे को पहले हम्म, जो नए यंग फैंस है उनके बेनिफिट के लिए आई जस्ट वांट टू रिपीट दैट स्टोरी जो अपन स्टार्टिंग में मिले थे। बिकॉज आई नो हाँ हम लोग ने 10 बार बोला है, बट आई जस्ट वांट टू रिपीट बिकॉज अपने बहुत अभी नए फैंस है, बहुत लोग को नहीं पता होगा। जब या शुरू में जब आदित्य रेड्स वीडियो बनाता था, तो आई यूज्ड टू गो पागल कि ये कौन है भाई, ये बंदा आदित्य रेड्स वीडियो बना रहा है। एंड आई थॉट होगा किधर बाहर का, किधर का होगा, लाइक आदित्य होगा मगर बाहर रह रहा होगा, बिकॉज ऐसे क्वालिटी वीडियोस आई थॉट बॉम्बे में तो कोई नहीं बना रहा। तो मैंने मैसेज किया ऐसे ही, अरे भाई तू कौन है, कहाँ से है, कमेंट्स में, आई थिंक उसके वीडियो के कमेंट्स में मैंने डाला था। यस एंड आदित्य सेड मैं तो बॉम्बे का ही हूँ, लाइक बताओ तुम लोगों को कभी मिलने का है? तो मैं बोला भाई तू बॉम्बे का है, आई कांट बिलीव इट। मतलब हम लोग तेरे वीडियो इतना देखते उस टाइम पे, आई थिंक इट वाज लाइक 13 इयर्स बैक, हम लोग इतना देखते। तो मैं बोला आदित्य प्लीज यार एक स्क्रीनिंग में आ जा, मेरे को पर्सनली मिलने का है। तो आदित्य केम फॉर दैट वेन रूनी वाला। अभी बाकी का आदित्य तू ही बता अपने मुंह से। हाँ, सो व्हेन यू मैसेज मी आई थिंक मेरा तो यही सीन था कि यू टोल्ड मी अबाउट द कम्युनिटी कि हम लोग मैच स्क्रीनिंग देखते हैं। 150 200 पीपल कम टू द स्क्रीनिंग। पहले तो दादर में स्क्रीनिंग होती थी, अपना क्या नाम है, एवॉन रूबी में। हम्म, बट देन आयरिश पब आल्सो यू गेस टू डू। तो मुझे तो सुपर शॉक लगा कि ये मैन यूनाइटेड फैंस मुंबई में, वो भी 150 200 पीपल गेट टुगेदर एंड वॉच स्क्रीनिंग। सो आई वाज लाइक यार ये तो हम्म, एक्सपीरियंस करना चाहिए, स्पेशली ऑब्वियसली आई वांटेड टू मीट यू एज वेल। तो देन आई वेंट ऑब्वियसली टू द स्क्रीनिंग। और वो स्क्रीनिंग था रूनी का बाइसिकल वाला, एंड ऑब्वियसली व्हाट अ मैच, वी वन 2-1 अगेंस्ट सिटी। बट दैट फीलिंग हम्म, दैट आई had after watching the screening, because once the Rooney ka goal went in, obviously you're going crazy, everybody's going crazy, and you're trying hugging people who you don't even know. तो वो वाली फीलिंग बहुत सही थी। तो आई वाज लाइक यार यही मतलब ये कम्युनिटी और ये जो लोग हैं यही अपने सॉर्टेड लोग हैं, इनके पास ही जाना चाहिए। दैट्स हाउ आई became friends with Sunil, and I think then I became quite regular for few years, and then obviously so you get busy with work and other stuff, and so yeah, that's the हाँ, basic story मतलब of देख how me यार, and Sunil met. हम लोग ने कितने वीडियोस, आदित्य तो अपना वीडियोस बनाता ही है। हमारा जो मुंबई सपोर्टर्स क्लब का जो पहले होता था कि हम लोग 5 साल जो कंप्लीट किया था, हम लोग ने एक Yes. वीडियो बनाया था हमारे जर्नी पे, जो आदित्य ने बनाया था। 10 साल जब कंप्लीट किया आदित्य ने एक वीडियो बनाया था। तो वो दोनों वीडियो आई एम बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगा। अगर बाद में मैं होपफुली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी तो नहीं है मगर बाद में फॉर पीपल हु आर वाचिंग इट लेटर मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स डाल दूंगा, यू कैन वॉच दोस वीडियोस। क्रेजी वीडियोस है। एंड उसके बाद भी आई एम श्योर आदित्य तूने बहुत प्रोमोज वोमोज। एंड आदित्य, लाइक बहुत लोग को पता नहीं होगा मगर तेरे वीडियोस ओल्ड ट्रैफर्ड पे, लाइक ड्रेसिंग रूम में भी प्ले किए गए। लाइक डू यू वांट टू Yeah. शेयर कि ये ड्रेसिंग रूम वाला, आई थिंक जितना मेरे को याद है ये चैंपियंस लीग फाइनल के Champions टाइम League. हुआ था कि Yes, yes. सेमीफाइनल था? The Champions League वाओ। final for the Barcelona wala, the first one I think. When no, first one I think. First one when we lost. तो उस टाइम पे I had made the Champions League वाला, तो that basically video went viral a little bit उस टाइम पे. So that was 2011 I think, 2010 or 2011. So when it went viral थोड़ा सा, तो then what happened was somebody from the club contacted me, and that somebody was this guy Mike Phelan, and who's the other person who was there with Sir Alex? Rene Mulenstein. So हाँ, he got in touch with me. So he said कि यार देख ऐसा सीन है कि we want to play this video. So can you give me a download link or whatever? Can you send it to me? Well, of course, I'll be more than happy. So the reason was basically United case में ये था कि जो बहुत known story that Sir Alex used to motivate players with a lot of stuff. Whether it is through stories, whether it's to some getting some person in. So they obviously thought कि यार ये video भी सही है. We should play this video. Whenever I don't know when they played. Did they play it before the final? That I don't know. But then that was one of the stories what Rene had told me. कि that's why we wanted to share it with the players and kind of motivate them. तो मैं तो इमेजिन मैं भाई, तो फुल मतलब पागल ही हो गया था। मैंने बोला चैंपियंस ले लीग लो जो फाइनल लेना है के ले लो, पहले, कोई लेना है ले लो। चैंपियंस लीग फाइनल के पहले क्रेजी। तेरा वीडियो प्लेयर को दिखाया जा रहा है, मतलब मोटिवेट करने के लिए। इमेजिन, लाइक वो चैंपियंस लीग का वो स्टोरी था ना कि राकेश जो भारत आर्मी वाला है,
वो हम 99 में जो वो स्टेडियम में गया था, फ्लैग लेके, बड़ा सा फ्लैग जो हम उसने बाद में हमको मुंबई को गिफ्ट किया था कि मुंबई को गिफ्ट है ये फ्लैग, वो फाइनल में गया था जहाँ पे जीते थे। तो तेरा वीडियो इमेजिन लाइक पीपल, मतलब क्लब दिखा रहा है प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, मतलब इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव डन वेरियस कोलैबोरेशंस, आई थिंक पैट्रिस एवरा के साथ में, एडम मकोला के साथ में, आई थिंक सेटफोर्ड पैडक बेसिकली, सॉरी फुल टाइम डेविल्स है ना उस टाइम पे। Yes, full time devils they were. Yeah. एवरा का किया है, आई थिंक तूने और एक किसी का फेयरवेल वीडियो बनाया था कोई प्लेयर का। Rio Ferdinand. So वो basically it was more of a क्या बोलते हैं luck, because what happened was उस morning when I made the video and uploaded it, so one of the person knows Rio का agency. One of my friends in UK, he knows and he's been a fan for quite some time. So he keeps telling me कि तेरा काम बहुत सही है, and I know some players, so I keep sharing with them and I know their agents and stuff. So when I made the Rio ka video, and Rio is very active on Twitter that time, even now also. तो उस टाइम पे वो obviously I tagged him as well in the tweet. So obviously when people, lot of people retweeted, he must have got the notification or something. Then he retweeted the video before this friend of mine could share with him. He only himself retweeted. तो वो मेरे लिए बोला तो वो sorted ही हो गया. He was like, then Rio messaged me as well कि thank you for the video. I liked it very much, and yeah, that was the story with Rio. And of course you know about the Evra story, वो तो सबको ही पता है. No, you can say it again. Like I'm saying for the benefit. By the way, Daniel is saying, could you speak in English? Daniel, Oh yes, I can. basically we do our videos in Hindi, but I know Aditya has had so many international fans also. So I'm sure if people watching and later on also for their benefit, little bit we would talk in English, but प्लीज पार्डन मी, एटलीस्ट मेरा तो हिंदी निकलेगा ही निकलेगा, मेरे को ज्यादा हिंदी में आई प्रेफर टॉकिंग, बट आदित्य इंग्लिश तो बोलेगा। बट तो एवरा का स्टोरी बोलना, मैं भी भूल गया हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू पीपल वाचिंग यू कैन रिपीट इट। Sure. So what happened with Evra was I was in office. I got an Instagram DM from someone. I won't know that. I won't tell the person's name. So he said ki, I'm big friends with a lot of players, and there is an opportunity that I want to ask you with regards to one of the players. So first of all, I thought, yeah, who this guy is? I don't even know. So I checked his profile. So obviously, when I saw the profile, he has pictures with pretty much every Man United player you can imagine. So he's based out of Dubai, this person. So he has photos with Pogba, he has photos with Mata, with De Gea, with everybody. Basically, he's hosted everyone at his place, or he's at a very higher up place. So then, obviously, I said, yeah, I'm very much interested. Tell me what is it that you want help with. So then he said there is a player called Patrice Evra, obviously, and he's looking to make his retirement video. He's going to announce his retirement with next month or something. And would you be interested in doing the video? I was like 100%. I'll be on. Just tell me what needs to be done, and I'll get it done. So then he said, I don't know the details, but what I'll do is I'll give you Patrice's number, or I'll give your number to him, and he'll get in touch with you, and then you figure out whatever needs to happen. So I was like, okay, great. So then Patrice messaged me. He obviously shared the number. Patrice You messaged me, and actually he was spoke like, to him? yeah. So I didn't speak to him on like a call. It was more of a WhatsApp chat. So we were just going back and forth because he wanted to know what I wanted to basically know, okay, what I can do, what I can't do. So Patrice just basically told me, just I've seen some of your work, and I had made a video of Patrice before that, like a tribute video sort of. So he had seen that video and he said, I love that video, but can you make it more of my journey throughout my career, from all the clubs, if you can include all the clubs, and obviously the French team as well. So I was like, yes, 100% I'll do it. And then he said, so then I asked him a question that, Patrice, I make videos on YouTube and I use a lot of copyright music. So, and I'm I'm just a YouTuber who I just make it for fun. There's no commercial value to it. And obviously when you will be posting it from your handle and stuff, so the music issues. So it was a very good answer that he gave. He was like, I don't give a shit about the music, use whatever you want, my legal team will figure out what they needs to be done. Like that is exactly what I wanted to hear. So then once he gave me the freedom to do whatever I wanted to do, then I started just work, getting the work done. I made the video. अब उसमें scene ये हुआ था that for some reason he had told me a date. I think I don't remember the exact date, but he had given me a fixed date. This date is when I'm planning to make the announcement, and obviously we'll release the video with the announcement. I was like, fine. 1 week before the announcement could be the date was coming, Patrice again messaged me saying that, dude, I may need the video tomorrow.
because in the French media, basically some journalist has leaked that he's getting retired. So he said, I have to make the announcement tomorrow because it has already been leaked that I'm going to get, I'm going to announce my retirement next week. So, and at that point, basically, I had made the video 70-75%, but there was still some stuff remaining. And I was out of town as well at that time because I had told him that for 2 days I'll not be there. So I was, I think, outstation with my family. We had just gone for a small trip. So I was at a remote place in somewhere, before Nashik or somewhere. कोई तो छोटे से होटल में था, वहां से मैं 3G पे मैंने हॉटस्पॉट लिया हुआ था, एंड देन आई वाज शेयरिंग द फाइल विद हिज टीम because I knew कि ऐसा कुछ problem हो सकता है, so I had finished the video from my end. Once I finished the video, obviously I sent it to him first, or to Patrice, to see what his reaction is, or if there is any changes that needs to be done, or some part that needs to be taken out. So when I sent him the video, he quickly messaged me in like 5 minutes. He's like, "Yeah, I'm out with friends right now. I have only seen the first 10 seconds, and I absolutely love it. I will go home, I will relax, and I will see it in full shanti, and then I'll give you my feedback or whatever it is." And late night, he had messaged me. He said, "Ki, this is one of the best videos that you've done. I don't think there's any changes needed." And usme, the thing that I had done from my end, it was more of a chance that I had taken, was I have put in my name in the video, which obviously Patrice didn't knew. When you see the video, it starts and then starts me after like 30-40 seconds. You see edited by Aditya. So Patrice obviously did not mind it at all. In fact, what he did after that was, once he saw the video and it was getting posted, then he asked me to give my Instagram handle to his team so that he could tag me in it as well when he posted the video. So that was the Patrice Evra video. And then after that also, I made a couple of reels for him as well. I think he was reaching 5 million subscribers on Instagram, or followers on Instagram. So he wanted a quick 30-second video. That also I had done for him. So yeah, that was a Patrice. And then obviously बट the good thing तूने was that I सोचा था? met him. हाँ, No, but the बोले good बोले. thing was I finally met him because Patrice had come to Sony for the हाँ. Europa coverage, Euro 2024. हम्म. And before he came, we had got on a call because we wanted to do a little promo with him announcing that he's coming. So on the हम्म. call, I told him, "Ki, Patrice, do you remember me?" So he was like, "No, I don't know who." Then I told him, "Ki, I had made your retirement videos." Like, oh my God, the world is so small. And then when I met him in Bombay, obviously he was super happy. He was like, "Hey, thank you for the video." And yeah, Patrice is such a great person. Yeah. Very, very funny guy. Super chill to be around. इमेजिन यार, देख, फॉर पीपल हु डोंट नो, आदित्य ने बहुत साल पहले स्टार में काम किया है, फिर अब सोनी में काम कर रहा है. तो आई थिंक Yeah. आदित्य हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद फुटबॉल. आदित्य, मैं ये भी बोलना चाहता था कि भाई, वो खाली ये नहीं है, एवरा तो ऑफ कोर्स, मतलब तूने ऐसे फर्डिनेंड का भी बोला, एवरा का भी बोला. तो कोई याद है अपन ने जब ड्वाइट योक आया था, आई थिंक यू मेड अ ट्रिब्यूट वीडियो, स्मॉल वीडियो फॉर हिम. Yes. ड्वाइट Yes. योक, बाय द वे, ये बहुत लोग को पता है कि नहीं मालूम, ने ड्वाइट योक एलेक्स फर्गसन का लास्ट प्रीमियर लीग ट्रॉफी लेके इंडिया जब आया था, जो आजकल बहुत देखते हैं पब्लिक ट्रॉफी लेके आते. यूनाइटेड तो ऑफकोर्स सालों से कुछ जीत नहीं रहा है, अभी एफए कप जीता था तो आया था. बट एलेक्स फर्गसन का लास्ट ट्रॉफी लेके ड्वाइट योक आया था इंडिया टूर पे, बॉम्बे में थ्री वाइज मंकीज पब के अंदर. उस टाइम पे इतने नहीं होते थे, कि हम लोग ने कन्विंस कर लिया था कि सिक्योरिटी हम मैनेज कर लेंगे, पब्लिक को बुलाया था. एंड ड्वाइट योक का भी आई थिंक आदित्य ने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, एंड ही सॉ इट हिमसेल्फ. एंड फिर उसके बाद आई थिंक ओले के लिए, डिड यू मेक ओले का वीडियो आल्सो जब ओले आया था? Yes, I had made the Ole video as well. The one that this guy was done. What's his name? Forgot तिलक. the name. Tilak, yes. For Tilak, I had हाँ. made the video announcement video because he basically gave me the concept that this is like a once in a lifetime thing that they're doing, and it's going to be great. And obviously, it was a good show as well, good host that he had done. So yeah, for Yep. Ole also I had made a video. कमेंट्स में आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग. आई थिंक पेरिस वाला, आई थिंक यस, कमेंट्स में एवरीवन इज सेइंग कि फेवरेट वीडियो क्या है. प्लीज लेट अस नो व्हाट्स योर फेवरेट आदित्य रेड्स वीडियो. मैं अपना एक ये बताता हूँ, मेरा रिचुअल क्या है. मैं जब भी आदित्य रेड्स वीडियो आता है, मैं पहले अपना पब में रहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब काम वाम कर लेता हूँ, ये वो. रात को आता हूँ फुल ऐसा रोने के लिए तैयार. मतलब आंसू मेरे रेडी रहते हैं जैसे ही आदित्य का वीडियो चालू, मतलब आंसू टपकना चालू. बिकॉज यार आदित्य के वीडियोस, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को कभी भी, अभी भी व्हेन आई फील लो, I usually go and re-watch all those पहले का videos. Paris वाला तो of course I think outstanding था, जो footage तूने use किया था. Like, do you want to say something about that? I'm sure one of the best moments था. Paris one was more of a क्या बोलते हैं, shock to me as well because I think वो nobody had believed कि यार ये हम पेरिस में जाके 3-2 जीतेंगे after the first leg especially Right. when we lost 2-0.
So that euphoria moment was so high that you had to make a video regardless. So, and I usually don't make videos of a match specific ki hone ke baad. It's almost like a preview that I do always, like कि बड़ा match आ रहा है, so I'll make a video and I'll see what happens to hype up the match. This was the first time I did it after the match, and obviously it was such a great occasion, especially given the circumstance that we had, the Oleka season, the Mourinho season, and it wasn't going well. Then Ola came, and then obviously everything changed. So it was a great moment to make the video, and obviously it came out so well. Especially the fan reactions जो थे उसमें सारे जब वो when Rashford is about to just take the penalty. I mean that was the हाँ high हाँ, moment, मेरे and को I सबसे still बेस्ट remember. उसमें वो हाउसन स्टीवन हाउसन का जो वो कुर्सी फेंकता है, आई थिंक है Kursi. ना उसमें. Oh yes, man. And क्रेजी what I had क्रेजी, आई done थिंक. was for that video, I obviously tweeted ki what, because there were so many reactions on Twitter that night of people हाँ. reacting to the goal. So I had knew that I had to use this part in the video. So then I had asked people next day that whatever reaction you have, please send it to me or send me a link. I'll download it and I'll add it to the video. And so many people had sent so many videos of their reactions. So yeah, that's the fun आई part विश of. मैंने भी I अपना know. रिएक्शन वीडियो कुछ रिकॉर्ड करके किया होता तो मैं आदित्य रेड्स के वीडियो में होता यार, लाइक अमेजिंग होता यार. 15 मिनट के ऊपर हो गया है. एवरीवन हु इज वाचिंग यार, व्हाट अ नाइट आदित्य हमारे साथ में बात करने के लिए. ऑफ कोर्स मैंने तो बहुत बार ये किया है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू व्यूअर्स जो भी नए पब्लिक देख रहे हैं, कार्तिक यार मैंने 15 मिनट तक तेरे को कुछ बोलने नहीं दिया. डू यू वांट टू आस्क? मेरे पास तो ऑल 10 Yes. रेडी क्वेश्चंस है, बट डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बाय द वे कमेंट्स में एवरीवन इज मेंशनिंग, आई थिंक डेविड डे भी मेरा फेवरेट वीडियो है. डेविड डे का जो Oh वीडियो है yes. Right. मॉन्स्टर वाला, दैट इज क्रेजी. एंड एलेक्स फर्गसन वाला, इट्स माय फेवरेट. एलेक्स फर्गसन का जो तूने पूरा ये यूज किया था, उसका जर्नी, एलेक्स फर्गसन, आई थिंक उससे Yeah. बेटर समिंग अप एक वीडियो ही नहीं हो सकता. जिसने नहीं देखा आदित्य रेड्स के चैनल पे जाके देखो. आई थिंक क्रेजी वीडियो था. आदित्य, कार्तिक, डू यू वांट टू आस्क हिम, या तूने कब से चालू किया देखना का आदित्य रेड्स का वीडियो? या मैंने तो जब से एनवीएससीएम से जितना मेरा कांटेक्ट हुआ, जब मुझे मालूम पड़ा दैट whenever आदित्य भाई posted anything, तो भी मैंने इनका हैंडल भी देखा है, followed him right away because कोई तो एक वीडियो था, I don't even remember which one, बट मैंने देखा एंड लाइक एवरी वीडियो का इनका एक कॉमन थीम है कि आप वीडियो देखो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पैशन फील होता है, गूज बम्स तो पक्का रहता है. तो इट वाज लाइक मैंने कुछ सोचा ही नहीं. आई वाज लाइक आई विल जस्ट डायरेक्टली फॉलो बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग दैट ही पोस्ट. सो तब से तो आई हैव बीन अ रेगुलर फॉलोअर, रेगुलर वॉचर ऑफ हिज कंटेंट, एंड like it's great to see and interact with someone who's done such great work, honestly, कोई after सवाल some पूछना every चाहता है? video. Thank you. और मैं तो यार एट दिस मोमेंट तो बस सवाल नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग. अभी मैं जैसे इनसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो वीडियोस ही आ रहे, कोई वीडियो का कोई मोमेंट, कोई वीडियो का. जितेश So one जितेश one इज सेइंग thing that Zlatan वीडियो. जितेश इज अ रियल मैड्रिड फैन, वो Zlatan वीडियो बोल रहा है. अच्छा, तूने थोड़े न्यूट्रल वीडियोस से बनाए, मोस्टली तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है. पहले तो मैं पूछूंगा लाइक हाउ डिड एडिटिंग कम टू यू, लाइक हाउ डिड यू बिकम, बिकॉज़ आई नो तू जब वीडियो बनाता है यू हैव लाइक, तू पहले तो कंपाइलेशन हाउ डू, बिकॉज़ आई नो मैंने तेरे को ये सवाल बहुत बार पूछा, एवरी टाइम यू से मेमोरी मैन, लाइक आई कीप, बिकॉज़ इतना अगर तूने yeah. वीडियो स्टोर भी किया होगा, हाउ डू यू रिमेंबर कि लाइक हाउ डिड एडिटिंग कम टू यू, लाइक हाउ डिड यू बिकम अ एडिटर, ये वो कैसे हुआ? Editing came to me was more like a started like a hobby almost. So what happened was 2006 or 7 की बात है. Obviously तब social media तो होता नहीं था. There was forums. तो ये सारे forums पे I used to keep going. And वहाँ पे एक section होता था called video compilations. So when you go into video compilations, obviously there were a lot of people who would put, and तब YouTube भी इतना famous नहीं था. So people would not put YouTube links. People would put download links of the videos. Obviously they'll put some screenshot of किसके बारे में है video, is it about a player or a club or whatever, and then you download it and then you watch it and then you comment on the thread. What did you feel about the video? That's how it started basically. And the first one of the first videos that I liked was Thierry Henry of because somebody had made a very kadak video of Henry in 2004 2005 wala season when he was really at his peak at that time. And that's how it started. And then I basically used to visit the forums, and वहाँ पे मुझे पता चला there was a software called Sony Vegas जिसपे ये editing होती है, and you obviously do. So obviously I downloaded the cracked version of Sony Vegas, installed it, and first time when you open a editing software, it's very difficult to understand what to do and where you have to do and where you have to put the clips and whatnot. So obviously there was, in that forum itself, there were a lot of tutorials of how you can get about, how you can start, where you can download clips and all, and that's how it started a little bit. And obviously then there was another
I think site called soccer video or soccerpulse.com. I can't remember the exact name. उस पे ये होता था, उस पे there used to be one list of all the top compilation makers, and one of my videos was ranked 6th in that. There was a David Beckham video that I had done बहुत पहले, तो डेविड हाँ, बेकम का डेविड बेकम भी मेरा फेवरेट ही है, वो भी बहुत अच्छा है। तो वो वीडियो वाज लाइक दैट रैंक्ड 7th आउट ऑफ 100, तो टॉप 100 का उनका रैंकिंग होता था। तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू मेक वीडियोस, लॉट ऑफ फॉरेनर्स हु वर फ्रेंड्स विद मी who used to make videos. So I used to, kind of chat with them and, pick their brains as to what they can do, how do they do things better. And that's how your interest peaked. And that's how my interest peaked as well. Ki, yeah, this is something that I think is fun as well. And plus, I'm getting better at it as well as I kept making videos and stuff. So that's how the interest grew. And then obviously YouTube ka boom, the YouTube boom happened where everything then started going on YouTube. And I used to hate YouTube earlier. लाइक ये ऑनलाइन कौन वीडियो देखेगा, तुम डाउनलोड करके देखो, मच बेटर क्वालिटी, द एज द कंटेंट, द क्रिएटर्स vision comes to life when you download the highest quality video. And obviously as years went by, YouTube became super cool and super important to all the content creators, and that's how the journey basically started. So yeah, that's been तो my पहला वायरल वीडियो कौन सा गया था, पहला जो लाइक यूट्यूब पे? बिकॉज आई नो आई हैव तो वॉच्ड ऑल योर वीडियोस ऑन यूट्यूब ओनली, लाइक पहला वायरल कौन सा गया था? लेट मी चेक माय ओन चैनल, बिकॉज़ मुझे खुद को याद नहीं कि पहले वाले वीडियोस यार कितने पुराने हो गए। मेरे को तो बोलने का जरूरत नहीं है, मगर इफ एनीवन इजंट फॉलोइंग, प्लीज गो एंड फॉलो आदित्य रेड्स। तुमने अगर नहीं देखा है तो भाई जिंदगी में बहुत मिस आउट किया है। I mean, with what I understand, he went viral before viral going was a term. उस टाइम Like पे no one even वायरल knew गोइंग कि टर्म नहीं। viral जाना क्या है. Exactly. And I so think I had a question, yeah, tell me. Aditya bhai, I had a question. So the fact that you are a football fan also helped, right? Because I have worked with editors, but वहाँ पे usually क्या होता है कि they treat it as a work कि okay मुझे project मिला, मैंने काम किया and you leave it off. But the fact that आप fan हो तो you're more involved. Like सुनील भाई asked कि वो moments कैसे याद रहते हैं. It's the fact that you have lived those moments, so you know कि ये जगह पे ये moment डालना will make it more relatable to everyone, right? Absolutely. I think I became a football fan first, and then the video editing thing Right. started. So that obviously helped, because that's how the theory on everything started, and I saw the video, and that's how I was like, okay, ये part भी ये भी कोई चीज होती है where you people create these kind of clips. And obviously I was always into this media sort of field, animation, so I was a huge fan of animated movies. And when I did my college and after I finished my college as well, my point was कि यार मेरे को normal job वॉब नहीं करना, मुझे एनिमेशन में ही कुछ करना है. आई वांट टू मेक एनिमेटेड मूवीज और समथिंग. सो देन आई डिड अ 3-year कोर्स, एंड वो 3-year कोर्स में देन इन एनिमेशन बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू पिक योर specialization after the 3 years. Do you want to be an animator? Do you want to be a VFX guy? Do you want to be a character animation? Do you want to do lighting? Do you want to do rigging? ऐसे सारे different points है. So I obviously choose VFX, and then उसमें होता ही है कि you have to make your own reel of what you've done for the 3 years. अब रील बनाने के लिए यू नीड टू डू एनी वन सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल, नहीं तो रील बनेगी कैसे कि व्हाट वर्क यू हैव डन फॉर 3 years. सो दैट वाज आल्सो हाउ इट स्टार्टेड. एंड एज यू सेड कि फुटबॉल वाला जो फंडा है, बिकॉज आई वाज अ फैन, it basically became very second hand to me कि यार I तो already know. Right. And then it becomes so much easier because once you see the clip, once you see the match, obviously we are watching almost all matches, so you know the moments. And lot of times what happens is in these pre-matches, not India ka coverage, but the Sky Sports coverage and BT Sports coverage, they do a lot of video clips, 3-4 minute video clips with some great angles and great clips. So that those moments, even you basically once you see it, because ये यहाँ इंडिया में तो दिखता ही नहीं है ये सब, we directly go to the match. And अभी तो फिलहाल it's a lot better because Premier League does a lot of pre-match shows and build up and everything. But in those earlier years, I mean, ज़्यादा कुछ होता नहीं था, सिर्फ वो John Dykes used to come with couple of other guys. He would do some match का talk, pre-match talk, and then directly go to the live coverage. So yeah, I mean, those were the things that made it even more better, and in terms of remembering those moments कि कौन सा moment कहाँ जाना चाहिए. And just on that point, on the Dagaya point, just one anecdote is that the original Dagaya video was not for Dagaya, it was for Tom Cleverley. So that song, Monsters wala,
the edit was going on Tom Cleverley. I had started the edit because Tom Cleverley Imagine. also that season was having that season only. 2011-12 में the first season when Tagaya came, Tom Cleverley was just coming into the midfield and वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा था. Young player wasn't doing well. And people were suggesting कि यार ये क्या इसको बच्चे को खिला रहे हो, ये से हो भी नहीं रहा है तो भी you're doing the same thing. So I started on Tom, but because I didn't have enough clips of Tom Cleverley, and then डगेया के ऊपर सेम क्वेश्चन आने लगे कि यार ये डगेया से होगा नहीं होगा, वैंडेसा का रिप्लेसमेंट, this that and all. So I was like let me try it on डगेया, and obviously it blew up. आई थिंक डगेया से तो बहुत ही सही हो अच्छा गया. चॉइस था. बाद में जाके अभी सोचेंगे कि अच्छा चॉइस. राइट. आई थिंक Exactly. डेविड डे वाला वीडियो वो क्रेजी था. बट ये तूने सवाल जो बताया कि मॉन्स्टर वाला, तो मेरे को मालूम है तेरा और म्यूजिक एसोसिएशन, मतलब एवरी म्यूजिक यू यूज इन अ वीडियो तो उसमें बहुत थॉट डालता है. आई नो तूने मेरे को प्राइवेटली बहुत बार बताया कि जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, लाइक आई कीप इट कि मैं इसको यूज करूंगा. लाइक हाउ डू यू डू? एंड तेरा ये जो स्पेशल नोलन का जो तेरा, आई नो तो यू लव नोलन, नोलन भाई, क्रिस्टोफर नोलन I तेरा love him. भगवान है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका म्यूजिक यूज करने का ट्राई करता है. आई थिंक तूने Yes. इंसेप्शन का यूज किया है, उसका हर मूवी का यू हैव ट्राई टू यूज इट. अभी भी लेटेस्ट आई थिंक जो तूने वीडियो बनाया है रूबेन एमरम का, उसमें भी, उसमें ओपनहाइमर का. यू आर अ ह्यूज क्रिस्टोफर नोलन फैन. अगर कोई भी तेरा वीडियोस देखेगा, बट डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट कि लाइक पहले तो म्यूजिक कैसे तो चूज करता है, एंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद क्रिस्टोफर नोलन? देखो म्यूजिक का ऐसा है कि you get better at it with time, because that is something very क्या बोलते हैं, it happens after years and years of experience, because you're listening to so many tracks, you're listening to so many things, you're watching so many videos every day. It's hard to keep an eye on everything that is good, but once you start making videos day in and day out, I think you get a hang of which song can go where, and what is a good song to make a video out of. Especially जैसे डगेया वाला था. So डगेया, as I keep saying a lot of times also, so I get inspired by a lot of videos as well. So like how I've told it so many times, Christopher Nolan, obviously him being Nolan, and he's a master of storytelling, especially challenging the viewer. That's what I want to do with all my videos as well, that you have to keep the viewer interested in a way. So always, when in my videos, a lot of times I do is कि end में मैं कुछ ना कुछ तो डालता ही हूँ. Either it's like a comeback, or either it's like a preview to the upcoming video, or some element that has to be there, like a surprise element, because then it becomes, the video becomes more fun. Otherwise it's the same thing हर बार, it's just normal, start होता है खत्म होता है, उसमें मजा नहीं है. Even for Ruben Amarin, the video that I made right now was only Oppenheimer. जो बीच का ट्रैक है, that was the only part, but I was not feeling it, मजा नहीं आ रहा था, because I think यार it's a new announcement and it's a very emotional video, the beach का part of the video. So I thought कि इसको मस्ती चाहिए, that there needs to be some bang and some तड़का in the video. And obviously this track of Travis Scott, Fiend, which is the WrestleMania track. So I am a huge WWE fan as well, because obviously Sony mein hai, so we keep watching WWE, and there's lots of promo work that comes. Even in the Monster video, the Dagea track was a tribute video that they had done for a wrestler, WWE. And it's ka bhi same story tha, like Dagea, where he had an underdog and then he won the championship belt. And they had made a video of it, of that person with the Dagea track. So that's how you basically become, associate yourself with players and with songs, and कि ये गाना इस player पे अच्छा जाएगा जैसे. So that is how I kind of remember it. And obviously Nolan का तो मैं क्या ही बोलूँ. I love his work, and his music tracks are also very very specific in terms of what his movie is telling. Like I love Inception, and one of the best tracks that I've used is the time cricket track hai in the movie Inception. I'd used that in the Paul Scholes ka video. My God, that is one of the best tracks. या बट ऑफ कोर्स देख, नोलन का बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हैंस जिमर, मतलब हैंस जिमर का म्यूजिक है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो यूज करता है. आई एम सो क्रेजी, मतलब जब भी तू नोलन का कोई भी या हैंस जिमर का म्यूजिक यूज करता है भाई, आई लाइक, मेरे को लाइक अभी गूज़बम्स आ रहा है, मेरे को गूज़बम्स आ रहा है. आई लव, मेरे को भी बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे को भी मजा आता है. देख आदित्य, कोई पूछ रहा है कि क्विक क्वेश्चन, 5 टॉप चैनल्स, फैन चैनल्स व्हिच यू फॉलो. आई थिंक 5 तो पता नहीं, बट 2 or 3 which you want to name, 5 quick fan channels. Yes, so obviously Stratford Paddock is one that I keep following, but अभी इतना नहीं दिखता मैं. Adam, because keeps coming, keeps going, so it's उनका content थोड़ा इधर उधर कभी कभी हो जाता है. Another channel that I obviously follow and love is United People's TV. There's a guy called Sam. I मेरा love him. favorite. I think yes. So I'm actually working with him as well right now. So Oh, because I've really? known Sam, yeah. So I've known Sam for a long time, and he wanted me to make
kind of do collab with him and make us cinematic intros for his videos. Hmm. So उस time पे तो Hmm. मेरा उससे वो हुआ नहीं deal because obviously I was busy with my own work and stuff. But now we've come up with some stuff. So I was like, I can't keep telling no to this guy. He keeps asking me. So नहीं then नहीं this time we said, yeah, let's start and then see where it goes. So right now we are doing a video. I'm doing a video for him. Probably in the next week or thing it should come out. So I'm basically doing cinematic intro. So obviously, and his videos are so good. I mean, the research so that this good guy यार does, Yeah, भाई it I is. have लाइक मैं अभी हम लोग मस्ती में चैनल चालू किया था ऑफ कोर्स देन यू डू इट Hmm, सीरियसली बट मैं उसको अब आई कीप इट एज अ बेस कि भाई दिस इज द लेवल लाइक यू एनी yeah, चैनल कैन गेट पीपल और वो जितना तू देखेगा वो कंट्रोवर्सी कुछ नहीं ज्यादा वॉच yeah. अलॉग्स This is नहीं what credible. करता that's ज्यादा what I like the most. Yeah, मतलब वायरल मोमेंट्स वो ये नहीं करता इज बेसिकली व्हाट ही भाई बिल्कुल भी टॉक्स नहीं एंड करना. अभी जो उसने एडिटिंग वाले वीडियोस बनाए रिसेंटली आई थिंक ही Hmm, स्टार्टेड डूइंग एडिटिंग वीडियोस बहुत अच्छा है yeah, लाइक अमेजिंग है तो आई थिंक दैट इज मेरा भी वन ऑफ द पर्सनल चैनल्स तो एनी yeah. अदर And चैनल I think this one, Stretford Paddock, and yeah, I think these are the two that I most follow. मतलब इसके अलावा तो there is not much as in terms of football as well. I think the only one would be the Gary Neville channel right now. I think that is the best football channel ओवरलैप right now. Overlap. Oh my God. मतलब it's like such a easy channel to watch because उसमें भी या वही है मेरे को you know वो the players and it's no nonsense. It's just normal people having a good banter stuff and football chat. So एंड that's रॉय fun. किन तो मतलब भाई अलग लेवल Roy पे है Keane. वो रॉय किन King का of बैंटर one-liners, तो king of one-liners. My God. एंड उसका जो फुल कैरेक्टर है लाइक रॉय कीन एज अ कैरेक्टर लाइक एवरीथिंग इज लाइक अब टू फनी यार बहुत मजा आता है Yeah. तो ऑफ कोर्स यार क्विक क्वेश्चंस एक दो पूछते हैं जो मैंने सब हर जगह डाला था Go कोई for it. कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो यार योर पर्सनल वीडियो जो तूने बनाया तेरे को सबसे ऑफ कोर्स तेरे को सब अपना वीडियो अच्छा Oh. लगता होगा बट योर पर्सनल My personal one second, huh? Can you hear me? Like, हाँ हाँ yeah, आ yeah. रहा है बोल Oh, बोल okay. My personal favorite would be, I think, one of the most favorite was the Rooney one that I did with Adam McCullough and one of my या friends, Priyank, who had written the script. I think that came out extremely well because it set the story of Wayne perfectly as I wanted it to. Because everything in that came out well. The story, the script, the music, and obviously the edit. That was one of my favorites. The Gaya one, obviously. A lot of people keep saying to me that Jose Mourinho edit, which I also agree. Jose Mourinho का जो edit था, that was basically flawless because it became so viral that and उसका timing बहुत सही था because I had made the video. We knew कि Mourinho was coming after Van Gaal got sacked. So I had already made the video and I knew the moment the club announces it, I will make the video live. That I had decided. And the moment they did, I made it live and obviously it went super viral. And that video was also killer. So yeah, those three videos come to mind straight away. एंड योर फेवरेट यूनाइटेड प्लेयर ऑफ कोर्स लाइक एक बताना मुश्किल है Oh, बट Ruud van Nistelrooy. रियली That'll always be, yeah. So there are two players, David Beckham and Ruud. Beckham introduced me to the club because of the 2002 Japan World Cup show जहाँ पे जापान में हुआ था. Because every newspaper was covering World Cup and obviously it was filled with David Beckham and his haircuts. And the moment how it basically I became a United fan was कि obviously we knew David Beckham. उसके next season, so the 2002-2003 season, Star Sports या Star Cricket or whatever the channel was at that time, उस पे Premier League आ रहा था. I didn't even knew what Premier League is. And there was David Beckham playing in Manchester United का kit. And I was like कि ये David Beckham है, but ये England kit में क्यों नहीं है? मतलब England का colors में क्यों नहीं है? Why is he playing in this red and blue and red and black kit? And then obviously first week तो मैंने ऐसे randomly देख लिया. Then next week again I was watching and again David Beckham was there. That's how this interest started. In then I came to know that okay, this is Manchester United. This is a club competition. So football में ये अलग होता है कि country is different, club is different. That's how it started. And then once you start following United, Ruud van Nistelrooy that season was killer. He won us the title. And every week when you see him scoring goals for fun, you obviously become a fan, like a diehard fan. So yeah, Ruud आई एम सरप्राइज्ड definitely. वेन रूनी नहीं है लाइक वेन रूनी लाइक Pain is obviously there, but I think once Ruud was so important to me in terms of making me fall in love with United, sort of a thing. That kid, by the time Rooney came, tab tak to already I was, super diehard fan. So the first one was obviously Ruud, and will always be Ruud.
अच्छा, एक दो ये मॉडर्न नए लोग के लिए क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील जब आजकल, बिकॉज मैं तो इमेजिन में नहीं कर सकता, बट व्हेन यू पुट समथिंग आउट एंड जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इंस्टेंट कमेंट्स, एंड आई हैव तो नेवर सीन किसी कमेंट्स में कोई तुला बुराई करते हुए, मगर जब वीडियो जब वायरल होने लगता है, लाइक डू यू चेक एवरीथिंग कि कौन क्या बोल रहा है, और यू जस्ट डाल के तू चले जाता है कि भाई नहीं अभी मैं 2 दिन बाद देखूंगा? नहीं, 2 दिन बाद तो नहीं, but yeah, it is very difficult to kind of catch up with everything because there are so many comments and notifications happening. And what I do is I always put videos out everywhere all at once. So YouTube पे live, then I upload it on Twitter, then Reddit पे भी also there is क्या बोलते हैं, thread or a subreddit called Red Devils. उस पे भी also I मैचेस, put the video. And then obviously Instagram. So there's so many comments to check. It becomes super difficult. I am once I put the video, I'm there for an hour or 2 hours for sure because I'll keep checking if there is some issue or something goes wrong because YouTube is kind of difficult at times. कभी भी कुछ भी होता है YouTube पे, कभी भी वीडियो बैन हो जाता है या कभी भी कॉपीराइट का इशू आ जाता है. So that I do, and then yeah, I mean, then it's basically becomes कि यार at least everybody is liking it, so I know okay, I've done the right thing because that is the most important thing for me to figure out that people should feel what I feel when I'm making the video. कि मजा आ रहा है, at least it's a good video, and now I've built up a reputation that every video people expect so much कि अरे ये तो हो गया, अब तो मतलब क्रिस्टोफर नोलन आ गए वापस बनाने के लिए कुछ टाइप, which becomes super difficult because राइट then you're like प्रेशर you always want to प्रेशर भी बहुत प्रेशर फील होता होगा. राइट. correct. यार you have to outdo yourself कि हर बार की कुछ अलग करो. That's why I said कि जैसे मैंने ओपनहाइमर वाला किया, I was not feeling it, so then I added this fun track to it. So yeah, I mean that's why, as long as कभी people ऐसा like it, हुआ है, लाइक मैं तो मानूंगा नहीं, मगर कभी ऐसा हुआ है कि लाइक यू हैव मेड अ वीडियो एंड लाइक पब्लिक बुला रही है यार मजा नहीं आया, लाइक ऐसा मैं तो कभी मानता नहीं. लाइक एवरी सीजन तो प्रीव्यू बनाता था, आई रिमेम्बर पिछले 5-6 साल में, लाइक बीच में तो थोड़ा मिसिंग हो गया था, बट प्रीव्यू जब बनाता था एवरी सीजन प्रीव्यू हम लोग बोलते थे भाई ये तो पहले से ही बेटर, लाइक एवरी टाइम एक्साइटमेंट. बट कभी ऐसा हुआ है कि पीपल आर सेड कि नहीं यार? I mean, there are always people who keep selling कुछ ना कुछ तो comments आते ही रहता है. I mean, that is the way of things right now. Especially पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, but अभी it's cool to disagree with stuff, especially when everybody is liking and अरे क्या ये तो normal, हर बार का normally हाँ. here. People keep saying राइट, that, या. but I mean, it is what it is. I mean, देखो, as long as ओके. 95-99% people like it, then it's all cool. हाँ. और इसका लाइक व्हाट डू थिंक, इंस्टाग्राम रील्स, आर यू एबल टू कीप अप? लाइक तेरे को रील बनाना पसंद आता है कि यू स्टिल लव यूट्यूब वीडियोस? YouTube is king. Well, there is nothing better than YouTube for sure because I'm a OG YouTuber. वो तो कोई ले ही नहीं सकता. 2006 में मैंने YouTube चालू किया था when nobody I think had a channel as such. So YouTube will always be YouTube for sure. Plus it is a huge video library यार. मतलब every day when I come home, once I am in my room and I'm watching YouTube, I'm all 98% I'm on YouTube. Whether that is watching tech videos, whether that हाँ is हाँ. watching sports videos, whether that is watching some documentary, whether that is watching some random video from somewhere. But yeah, There is YouTube has always now become, something. yeah, there is so much भाई to watch. मेरे को लगता है मैं ये नेटफ्लिक्स ये सब ओटीटी का पे करता हूँ, देखता 90% टाइम में यूट्यूब, लाइक आई वॉच अ YouTube, लॉट ऑफ yeah. यूट्यूब, लॉट ऑफ, Same. इसलिए मैं अपने आप को यूट्यूबर ही मतलब मानता हूँ मन में. मगर Correct. और एक दो सवाल है कि लाइक तेरे को कार्तिक, तेरे को पूछना होगा, प्लीज बटन एंड आस्क, नहीं तो मैं मौका ही नहीं दूंगा, मेरे पास इतने सवाल है ना आदित्य से पूछने के लिए No, जो no, पब्लिक go जानना on. I चाहे. mean, मुझे जैसे ही मुझे कुछ क्वेश्चन आएगा लास्ट सॉल्व. हाँ देख, बीच में आदित्य, मैं इसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जब हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था ग्लेजर्स के अगेंस्ट, तूने ही प्रोटेस्ट किया था, यू स्टॉप्ड मेकिंग Yeah. वीडियोस. डू यू थिंक कि नाउ, व्हाट डू यू थिंक, मतलब अब ग्लेजर्स लाइक 25% चले गए, लाइक Yeah. पार्शियल ओनरशिप हो गया है, जिम रैटक्लिफ, लाइक डू यू वांट टू से इन समथिंग स्मॉल कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू ओनरशिप एंड I think the new ownership still has a long way to go. I mean, right now they have another controversy coming up with the ticket हाँ pricing that टिकट that has happened. प्राइसिंग. I hope they can solve it with the way that it's supposed to be solved because when Ineos came in, a lot of people thought that only ki at least now that the Glazers out of the picture, they have the football structure, they have now their own manager as well. So they've got the stuff that they wanted to do, but now you can't alienate the fans like this, where the people that are going there from years, season ticket holders, ला हम तो यहाँ पे दूर से देख रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला इससे. But the people that are actually paying money and watching week in week out, you can't just hike the ticket prices just because यार पैसे कमाने हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, because that is not right and that should not be there, especially now that the new management, if this was the Glazers that have done this,
किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था because it was expected of them, but you cannot expect the same from Ineos. So नहीं I नहीं, hope ये they इशू figure पे this stuff out. ये इशू पे वेरी सुन हम लोग एक अलग वीडियो करके मैं डिटेल में समझाऊंगा, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोग को समझता नहीं है लाइक व्हाट इज Yeah, द एग्जैक्ट what प्रॉब्लम। exactly has तो happened? डिटेल में Yeah. हम लोग करके बताएंगे, बट अदरवाइज उसके अलावा लाइक जो भी उन लोग कर रहे हैं, तेरे को लगता है लाइक पॉजिटिव कर रहे हैं कि कुछ तो बेटर Yes. होगा इससे? Hopefully, I mean that is what we've been crying out for. कि football structure हो, football लोग हो who are making the footballing decisions. So now that all of that has happened, hopefully we'll have a ton of fortunes and But I don't know. I these players I'm not too confident again because I think everybody has said that कि यार ये players लोग को कौन है जो इन players से finally will make them play football the United way. I don't know if Amorim can do it as well because we all thought कि Eric Ten Hag was that answer. And the first season, Right. I really liked the West End. I don't know why people forget कि हम first हाँ season में हमने कुछ किया ही नहीं. Right. First season we had a very good season with Ten Hag where Casemiro was scoring goals. Fred, Scott McTominay, even though they were Fred and Scott McTominay, we were still winning games. We were still doing well. We won obviously 2 cups. But second and third season Rashford. where everything, yeah, Rashford had a 30-goal season. Like every week he was scoring with headers. और पता नहीं इसका क्या क्या चल रहा था, but then yeah, I mean that is how football is. It is about cycles and it is about consistency where United have lagged for so many years. Like one season good, then second season decent, yeah, bad, and then third season everything goes off wheel. So hopefully with Amarin as well, I'm hoping that things change and he is obviously a very likable character. I mean, we've seen all the training videos that has come out. जो हमेशा होता है, every नया manager आता है तो training videos are always very happy and people are supporting and loving and everything. And then things start changing. So hopefully that doesn't happen and Ineos has got the right person in. यार इसके पहले एक कमेंट मैं अनुज का एड्रेस करना चाहता हूँ। अनुज इज आस्किंग टिकट प्राइसेस ग्लेजर्स का डिसीजन हो सकता है कमर्शियल साइड ऑफ द बिजनेस, बट आई फील इसमें इनियोस को भी हाथ है, और बिकॉज इनियोस अब yeah, नया स्टेडियम के लिए कर रहा है भाई। नया स्टेडियम जब आएगा ना तब तो तुम भूल जाओगे ये प्राइजेस वाइजेस, correct. खतरनाक प्राइजेस आएंगे मतलब। तो चलो एनीवेज इस पे डिटेल में बात करेंगे। आदित्य और एक दो सवाल थे कि Yes. मेरे को मालूम है रिसेंटली लाइक हैव यू लाइक फॉलन आउट ऑफ लव, क्योंकि यूनाइटेड 12 साल से जीत नहीं रहा है। लाइक मैं अभी स्क्रीनिंग करते करते मैं पहले का टाइम याद करता हूँ। पहले का मतलब पहला जो मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स क्लब के जो फर्स्ट 5 इयर्स थे, वी वन द लीग 4 टाइम्स, 4 Yeah. टाइम्स आउट ऑफ 5 इयर्स। तो इमेजिन उस टाइम पे स्क्रीनिंग करना वो सच अ जॉय। अब तो मतलब मैं अभी भी करता हूँ, फॉर्चुनेटली अब मेरे पार्ट ऑफ द जॉब है, मेरे को मजा आता है, बट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत सफर भी करना पड़ता है। डू यू फील कि समटाइम्स कि यू हैव फॉलन आउट ऑफ लव कि मेरे को वीडियोस नहीं बनाना है यार? Almost a little bit yes and a little bit no as well. Just give me 1 minute. I'll have to just send one message. श्योर श्योर। Okay. Yes. Yes and no. More of a reason being that United. देखो, the reason why I used to make videos was very simple. That I wanted to make people feel the way I used to feel. When I am feeling Right. miserable, and then there's no point in making videos because team is not doing well. The problem is you and अभी ऐसा हो गया कि it's now become like a social media thing कि यार किसी की side ले लो, या players fault पे है या manager fault पे है. Are you Ten Hag in? Are you Ten Hag out? It has become ridiculous. There is no point to all of this. Point is United are not doing well. That is the end of the story. What we all want United to do well. What we all want is to win titles. वो अभी नहीं होने वाला. I mean, it's going to take time. But people have become so obsessed with it कि यार ये तूने ऐसा क्यों बोला, तूने वैसा क्यों बोला, you are taking this side. ये अच्छा, this guy is Rashford in, this guy is Rashford out. All of that does not बहुत matter anymore. Very डिवाइडेड much फैन divided, बेस and तो है। social media is the reason for that. I mean, I think when you are with among fans and all, I don't think we talk like this कि यार इसने ऐसा बोला so I'm not going to talk to it. एग्जैक्टली Everybody हाँ। chill यार, everybody is like हाँ चलो मैच देखना है, enjoy करना है, हार गए ठीक है, कोई नहीं, next week फिर जीत जाएंगे. But now that's why I basically quit social media when you used to tell me ना कि यार तू आजकल tweet हाँ नहीं करता. Like there's no point. It is so boring because even if you tweet something different, people will take it in some different context and will put it कि अरे you remember you told this at this time. So there's no point to all of this. That's why I think I stopped making videos as well, especially this season where I didn't make the preview video. Usually when I do, like, let me see what happens. I mean, it's not the end of the world that if I don't make a video. And whatever reason, obviously the season started off very badly with Ten Hag and whatever happened. So it is what it is. But yeah, I mean, think people need to just calm down on social media, and there's no point in taking sides. This is right or that is right.
end of the day, we all want United to do well, and if that happens, then I think the timeline is so good. When you see Twitter and United win, it is a completely different and fun place to be. But when Right. United lose, it's best to just turn off that app and go somewhere and chill. तो ये भी एक मैं Yeah. लास्ट एक पूछना चाहता हूँ कि तू इतना आजकल इनफ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाता है, बार बार तेरा कमबैक होता है मगर फिर तू वीडियो बनाता नहीं है, तो अभी हाँ। लेटेस्ट यू रिमेम्बर लाइक मेरे को पब में रहता हूँ हमेशा बात होता है, आई थिंक कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नहीं होगा जिसको आदित्य रेड्स नहीं पता होगा, तो अभी रिसेंटली आई थिंक 1-2 महीने पहले या 1 महीने पहले ही हुआ था, आई वाज टेलिंग आदित्य कि यार आदित्य कोई रैंडम 2 लोग आए थे और मेरे सामने ही बैठे थे और उन लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि आदित्य रेड्स कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा है यार, लाइक वो पब्लिक बोलते ना वो पंजाबी लोग क्यों नहीं दिखते, वो सरदार लोग क्यों नहीं दिखते, वैसे पब्लिक बोल रहे थे आदित्य रेड्स कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, मैं पीछे बैठ के सुन रहा हूँ, आई डिडंट वांट टू इंटरवीन, मैं बोला मैं कुछ इंटरवीन नहीं किया, बट मैंने आके आदित्य को बताया, आदित्य ने उसके पता नहीं उससे लेके बनाया कि रूबिन एमरम का वीडियो, हाउ डिड यू लाइक डिसाइड कि मेरे को ये वीडियो बनाना है यार, लाइक मैं बहुत टाइम से कुछ बनाया नहीं है. नहीं, so there were 2-3 reasons. I didn't want to make it initially. Given on that Sardarji wala point, even in my videos, people say the same thing. Yeah, right now, Ruben Amran got Aditya is back. Now it's the time for the Punjabis to come back to Old Trafford, so which is not going to happen. I'm like, yeah, right, chill maro. The Ruben Amran thing was more of a you know that I've never monetized my video, my channel basically. I've never monetized it because the idea was कि पहले and I've seen this with some of my friends as well who have monetized it and their channels have got blocked because obviously we don't own the footage or all the footage that is there owned by the leagues, they're owned by United and the broadcasters and all, and the music as well obviously we don't know, I don't own, it's the artists who own the music, so it's difficult to नहीं monetize म्यूजिक a तो channel चलो, like this. सॉरी टू इंटरवीन, बट म्यूजिक तो चलो इफ यू इवन इफ यू बाय लाइक इट्स यू Yeah, कैन even डू if you अवे do a विद द म्यूजिक, मगर non-copyrighted songs, yeah. हाँ मगर But फुटबॉल फुटेज बहुत मुश्किल है. exactly. So I never monetized my channel for so many years, but then out of the blue, because I was not making videos, as I told you, so then I was like, "Okay, let me monetize it. Whatever will happen, will happen." Because I was so over it, I was like, "Forget it. If it gets monetized, great. If it doesn't get monetized, then also there's no issue. I mean, it doesn't do any harm." And luckily, it got approved. Within like 2 days, I got the mail from YouTube that your channel has been approved for monetization. You're part of the YouTube Partner Program. So I was super shocked, first of all, because usually it takes a month for the approval to happen. And this happened in 2 days. So I still believe that कि ये 1 महीने में वापस से लोग चेक करेंगे और बोलेंगे अरे ये इसको क्यों कहाँ से अप्रूवल दिया, इसको वापस से डिक्लाइन करो टाइप्स. But yeah, that was one of the reasons. So once the approval happened, then I was like, okay, now that the approval has happened, let me upload a video, because what happens is so many, it's been a year since I made the last video, which was the last season का preview. So उसको obviously 1 साल के ऊपर हो गया. So because the 1 साल के ऊपर हो गया, the views of the channel obviously keep going down, because if you're not consistent with YouTube का वही है कि if you're consistently uploading, then you'll get new viewers, you'll get new subscribers to watch and sample your stuff. But since I was not uploading, so I got another reason. So basically there were 2 reasons. One, obviously I got part of the YouTube Partner Program, and I wanted to make a video so that now more new people can come in as well, and now I can actually make more videos, because now that I'm part of the YouTube Partner Program, there is a good chance that I'll get paid for some of the stuff. Obviously this means that you have to use songs which are not that copyrighted, or you have to do some stuff which is basically going to make sure that the video that I'm uploading doesn't have any copyright issues, which can happen later, because as I told you, with footage it's very difficult कि अभी Ruben Amrin videos has no copyright issues, but maybe 2 months down the line, 3 months down the line, it can get a copyright from FA or from the Premier League or from whoever that may be. So yeah, I mean, that is how it is. That is one of the reasons why I kind of came back and I was like, let me give it one more shot. And obviously people loved the video as well. So yeah, it was a good तो decision अगर to come back. इसमें पहले के वीडियोस भी मोनेटाइज होंगे कि या लाइक Yes. स्टार्टिंग विद अ फ्रेश स्लेट? पहले के videos will also get monetized जिसमें copyright का issue नहीं है. And then what happens is, in some of the videos also the money will go to the music artist, because it still recognizes the music, but you're still allowed to monetize, and the part of the revenue will go to the music artist. So out of 158 videos on my channel, I think 60 videos is monetized. The rest are not monetized because it's either copyrighted music or footage or some other random issue. So that ओके, is तो इसका एटलीस्ट इसका लाइक एक मिनट कार्तिक, लास्ट क्वेश्चन कि इसका एटलीस्ट मतलब है कि नाउ यू कैन मेक मोर वीडियोस, तो बहुत सारे वीडियोस बनाएगा? Yes, that is the plan, that hopefully
the channel doesn't get demonetized or anything, and I keep making more and more videos. I think the next video that I want to make of, or at least I have an idea, is Kobe Mainu, because I think he is Oh, the boy from Manchester, so I think it should be the interesting video to come up with. आई थिंक भाई पब्लिक पागल हो जाएगा अगर कोबी माइनो पे, बिकॉज कोबी माइनो इज लाइक वन प्लेयर जो सब लोग Yeah, यंग, everybody मतलब अभी likes हुआ him. था ना पिछले एफए कप में, गर्नाचो, कोबी माइनो, ये सब Yes. यूनिवर्सली पॉपुलर यंगस्टर्स है. एक लास्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, रोनाल्डो मेसी, इसमें कुछ ओपिनियन है कि It's रोनाल्डो तो Ronaldo ऑफ कोर्स all the रोनाल्डो है, time. Yeah, come on, पर man. अगर Man is मेसी ने तुझे बोला रिटायरमेंट वीडियो बनाओ भाई, मतलब आई एम अरे श्योर. आजा आजा, Messi is number one. Hey, but देखो, Ronaldo will always be Ronaldo यार. I mean, he's won us everything. मतलब what was not there to be won, वो भी जिता के गया भाई साहब. Plus तो मतलब gave us 90 million in revenue as well, जो कभी हमको मिला नहीं. Whatever reason we got Overton and Michael Owen that season. That's a different talk. But yeah, Ronaldo, what he's done, and the memories that he's given us as a player, as outstanding that one season 2007-8. Oh my God! I mean, nobody can come close to Cristiano, for me at least. मतलब he's the god, and अभी भी देखो RSL में तो वो फेल ही रहा है every week or the other. He keeps scoring goals. और मिलने का लाइक डू यू हैव एन ड्रीम कि मेरे को ये दो प्लेयर से मिलना है, लाइक बिकॉज देख अभी फॉर्चुनेटली बॉम्बे में इतने लोग आए कि हम लोग वी हैव बीन पार्ट, मैन आदित्य बहुत अभी रिसेंटली, लाइक हम लोग जब फर्स्ट मैच में, मैं बता रहा था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, फर्स्ट मैच जब मिले थे वेन रूनी का ओवरहेड किक, रिसेंटली लाइक हम लोग वेन रूनी को मिले थे बॉम्बे में, Oh yes. लाइक वी हैव बीन सो लकी कि पॉल स्कोल्स, गिग्स, लाइक नेम विटेज, सो मेनी प्लेयर्स हम लोग बॉम्बे में मिले. लाइक डू यू हैव एनी लाइक ड्रीम कि मेरे को इसको मिलना है? I think Van Nistelrooy will be right up, obviously, for obvious reason, because he's my favorite player. I am very disappointed that I couldn't go to Manchester. I think ये बहुत golden opportunity था to go to Manchester and be close to him or whatever. There was a chance that you could have met him through some the contact or something over there. But yeah, Van Nistelrooy is definitely one to meet. And from the current squad, I would say Bruno Fernandes. I want to meet Bruno because he's also a class guy. I mean, whatever, from when he's come to the club, the performance that he's given and consistently giving. ठीक है, एक दो सीजन आजकल भी अभी थोड़ा सा डाउन, उसका ऊपर नीचे होता रहता है. But yeah, Bruno and Rude would be the two that I would want to meet for sure. And one person I'm that sure I think everybody wants to meet is Alex Ferguson. I mean, if you meet ऑफ Sir कोर्स Alex, then यार, your life is complete. मैं वही बोलने वाला था कि लाइक अगर Yes. कभी डिनर करने का मौका या ऐसा कभी पर्सनली, बिकॉज आई नो मिलना ठीक है, प्लेयर को मिल लिया, बट अगर कभी लाइक इफ वन पर्सन इफ यू वांट टू हैव डिनर विद, आई एम श्योर योर आंसर वुड बी एलेक्स फर्गसन. Alex बट Ferguson, come on. भाई रूट मैन Like- भाई वैसे लेस्टर का मैनेजर बन रहा है, तो लेस्टर Yes. मैनचेस्टर से इतना दूर नहीं है. Correct. So hopefully, तो yes, future- that's the plan कि इंग्लैंड का प्लान करो और जाके रूड को भी मिलो, सर एलेक्स को भी मिलो, एंड ब्रूनो को भी मिलो. ऑल थ्री इन वन ट्रिप विल बी अ ड्रीम. आई थिंक आदित्य का मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियोस वो भी है जो वो खुद जब मैनचेस्टर गया था, लाइक फाइनली आफ्टर मेनी इयर्स ही वेंट टू मैनचेस्टर, एंड जो उसने अपने जर्नी का वीडियो बनाया था वो भी मुझे बहुत पसंद है. एंड आई थिंक हमारे एक एमएफसिम का भी बनाया था कि एमएफसिम ग्रुप ट्रिप का भी एक वीडियो बनाया था. आई थिंक दोस टू आर माय फेवरेट. मैं वो सब भी, मैं लाइक आई सेड, मैं इतना बड़ा आदित्य रेड्स फैन हूं, लाइक मैं अकेले में कितनी बार मैं रैंडमली ऐसा इंटरनेशनल ब्रेक में दुख में कभी वो वीडियोस निकाल के देखता हूँ, बैठ के रोता हूँ. लाइक आई एम अ मैसिव फैन. Like Karthik, any last questions you want to ask before we end this? And हम लोग आज के मैच के बारे में थोड़ा बात कर ले. Surely. So I had like the last question to wrap up. This was so basically you worked on so many videos, but like if I tell you is particular moments or out of all your videos, if you had to replace one of those videos with you actually living that moment live, so which one would that be? Living that moment live. I think it's amazing. I mean, since I became a fan, वहां से मैं बोलता हूँ from 2002-03, because I think the obvious answer would be the 99 Champions League final. I mean, the people that witnessed that final, I don't think they'll ever witness anything better than those last 3 minutes. Yeah. But for me as a fan, I think would be the Champions League final, the Chelsea one, the penalty shootout, because that John Terry walking up and the tension that यार ये तो मार ही देगा, John Terry, captain Chelsea, why will he miss? There's no reason for him to miss, and then he slipped. That's that Sir Alex keeps telling that there is some romance to Manchester United that no other English club has. So I mean that those were the moments. वो दिन क्या थे यार, मतलब to watch every final में we were there, every league title we were there.
So yeah, I mean Yeah, 2007-8 Champions League final, I mean that would be the one that I would want to go and witness. I think recently John Yeah. Terry ने कुछ इंटरव्यू में बोला ना कि like why did it happen to me, like मैं मॉस्को में, like बहुत दुख उसने बताया, तो मेरे को मजा आता है, वो दुख सुन के मजा आता है, like अभी भी वो उनका दुख वाला मोमेंट है, like but what do you think, like अभी तेरे को क्या लग रहा है, like last, of course मैं लास्ट करते जा रहा हूँ, सवाल पूछते जा रहा हूँ, what do you think यार, तेरे को मतलब ये सीजन ऐसा लग रहा है कि सिटी बहुत बेकार कर रहा है, लिवरपूल जीत जाए, लाइक तेरा लाइक मोस्ट यार हेटेड टीम कौन सा, लाइक डू यू हेट मैन लिवरपूल सिटी कि नहीं लिवरपूल, तो लिवरपूल लिवरपूल मतलब हमेशा ही है। लिवरपूल यू हैव टू हेट लिवरपूल। सिटी तो जो करना है करो भाई, तुमको ट्रेबल जीतना है, चौबल जीतना है, जो जीतना है जीतो, डोंट गिव अ शिट, बट लिवरपूल आर द एनिमीज, मतलब वो तो इट्स इंग्रेन्ड इन हियर कि लिवरपूल आर द एनिमीज, सो देयर इज नो चांस, एंड यही तो प्रॉब्लम है कि सिटी आर नाउ डूइंग फक ऑल व्हाटएवर लास्ट 5-6 games, Yeah, एंड exactly. लिवरपूल, यार लिवरपूल कल रियल मैड्रिड को भी हरा दिया इतना इजीली, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, दे आर टॉप ऑफ द लीग, 11 पॉइंट, नेक्स्ट वीक 11 पॉइंट का लीड हो जाएगा, आई एम अज्यूमिंग दैट दे विल बीट सिटी अगेन, सो इट इज डिफिकल्ट टू वॉच। वैसे भी हम तो कुछ कर नहीं Yeah. रहे, and Liverpool are doing extremely well. So yeah, I mean, hopefully आई they'll थिंक not win, सेम, but I think That looks like बिकॉज जीत जाए तो फिर 2020 वो जो एलेक्स फर्गसन ने जो yeah, बोला था ना कि भाई 20 जो मतलब तुम जीत जाओगे तब आना, मतलब 20 टाइटल्स, हम लोग correct. कितनी बार वो गाना गाते हैं 20 टाइम्स, इमेजिन लिवरपूल इक्वल कर देगा, तो फिर मतलब हम पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि भाई जल्दी हमको 21 पे Correct. पहुंचना है, जो 21 पे सालों आना से है। हम कर नहीं पा रहे, बट ऑफकोर्स वक्त ही बताएगा यार। आज का मैच का लाइनअप आ गया है यार, मैं एक्चुअली अब लाइनअप घर में नहीं बात करना चाहता, मेरे को आदित्य से बात करके इतना मजा है कि मैं लाइनअप मतलब ठीक है अनाउंस करने के लिए कर देते हैं, ऑफकोर्स सब लोग ने देख लिया होगा, ओनाना इन गोल, मैजुरोई सेम वापस वही सेंटर बैक खेल रहा है, डिलीट खेल रहा है, मार्टिनेज खेल रहा है, अच्छा है, मार्टिनेज को देखने मिलेगा, oh, एंथनी start आज अमाद जो रोल कर रहा था wing वो back, एंथनी वो रोल कर रहा है, wing back एंड फाइनली expected. उगाटे उगाटे को देख के अच्छा लग रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस, मलासिया अगेन गुड टू सी हिम, महीनों बाद, Okay. मेरे को तो साल लग रहा है, सालों बाद, मेसन सालों बाद. माउंट, हाँ मेसन माउंट अगेन, आई लव मेसन माउंट, तो Oh, देखने को nice. मजा आ रहा है, हॉयलैंड, आई थिंक हॉयलैंड, हम लोग ने लास्ट मैच बोला था रैशफोर्ड खेला था बिकॉज ही हैड मोर ट्रेनिंग, तो हॉयलैंड को देख के अच्छा लग रहा है, गर्नाचो आई एम ग्लैड, वो चांसेस थोड़ा उस दिन मिस किया था उसके बाद भी, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, सब लोग का मेरा फेवरेट एंथनी है, सब लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं एंथनी मारेगा, एंथनी ये करेगा, चलो यार आई थिंक इस पे ही वीडियो एंड करते हैं यार, आई वांटेड टू टॉक अबाउट द मैच बट आई थिंक आई वांट टू कीप दिस शॉर्ट सो दैट कल अगर कोई जाके वीडियो देखे, आदित्य रेड का कोई ओपिनियन जानना चाहे तो ये वीडियो अच्छे से देखे। आदित्य यार व्हाट डू यू थिंक, तेरा एस्टिमेट क्या है कि यूनाइटेड कब जीतेगा वो 21 टाइटल, ऑफ कोर्स ये बताना बहुत मुश्किल My है, God. बट व्हाट डू यू थिंक, इज इट कमिंग सून, मैं तो एवरी टाइम मैं, अच्छा तेरा ये एलेक्स फर्गसन के बाद फेवरेट मैनेजर कौन रहा है जो सबसे Ooh, ज्यादा होप तेरे हाँ, को that's a दिया good था? question. Ole Gunnar Solskjaer, मतलब आई दुख थिंक दुख या होता है, दुख इधर, दुख, जो रोनाल्डो का मैं देखो साइनिंग मैं और जो ड्रीम था। या बोलो आई बोलो। यूज्ड टू मैसेज आदित्य सेइंग कि भाई अगर ओले के एरा में रोनाल्डो के साथ में हम जीत जाए ना, लाइक तो आई थिंक लाइफ हमेशा के लिए बन गया होता ड्रीम सिनेरियो, बट ऑफ कोर्स मेनी ड्रीम्स हमको हम लोग ने देखे और जो पूरे नहीं हुए हैं होपफुली, बट तूने बताया नहीं लाइक कभी तेरे को लग रहा है, डू यू थिंक कि आते हुए दिख रहा है, या यू थिंक कि बहुत टाइम है यार? टाइम है, आई थिंक we'll need time. आई थिंक Amorim अभी जस्ट आया है, so I don't know how the players are going to react with him. अभी ये आज की टीम भी काफी सही है, I mean he said that all of the players are going to get chance, so this looks like lot of players again, and he also will know कि यार ये players, काफी सारे players है वो not going to be there part of his team the come next summer. So if Hmm. next summer, next 2 साल 3 साल तक Amorim is there and he's allowed to do what he needs to be done, whether that is moving Rashford on, whether that is moving Bruno on, whether that is doing whatever he wants. Yeah, मेरी team है, I will make it the way I want without any interruption, and Ineos backs him. Then there is a chance कि कुछ हो सकता है, but it will take time because यार we've fallen quite a way back. I mean हमारा striker वाला Hmm. डिपार्टमेंट ही देख लो, गोल ही नहीं आ रहा, गोल कौन मारेगा? वही मुझे तो डर लगता है सोच के कि गोल कौन मारने वाला है आज। तू जब तू गानाचो तू का जो इतना, सॉरी मैं बोल रहा था, हाँ, तू इतना वीडियो कंपाइलेशंस बनाता है, तेरे को ऐसा लगता है ना भाई गोल कौन मार रहा है इस टीम में, अरे लाइक गोल कौन तो गोल मारेगा? मारो भाई, तो कुछ तो क्लिप मिले कुछ। और मेरे को तो मजा रूड वाले इसमें ये मजा आया था 4 मैचेस में कि आफ्टर एवरी गोल रूड यूज्ड टू सेलिब्रेट लाइक अ क्रेजी, हम्म लाइक अ प्लेयर हिमसेल्फ। या
वही तो मजा आई आता है थिंक देख के यार, टेनाग passion टेनाग के जो अंदर show वो थोड़ा वो लग रहा था कि डाई टेनाग डाउन हो गया सेलिब्रेट था, नहीं yeah. कर रहा है, Yes, बहुत yes. ज्यादा सफर कर रहा था बेचारा, सफर And जो he मोस्ट यूनाइटेड basically मैनेजर्स करते हैं। सुपर प्रेशर में आ गया था, मतलब पहले क्या बोल रहा था वो, फर्स्ट डे उसका इंटरव्यू सुन व्हेन ही केम, एंड द रीसेंट मैच इंटरव्यूज, मतलब पूरा ही 360 डिग्री हो गया था कि योर फिलोसफी यू वर सपोज्ड टू गेट, वो सब भूल गया, एंड देन ही बिकेम सो मच अंडर प्रेशर। तो मतलब यूनाइटेड का जॉब इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन एमरन का मेरे को यही टेंशन है कि ही इज सो यंग Yeah. कि यार व्हेन द प्रेशर कम्स, एंड एज ही सेड कि यार मैंने 4 साल में इतनी बात नहीं की जितनी ये हफ्ते में कर ली, that itself shows you कि United are a different animal. So hopefully I am एग्जैक्टली। hoping कि ये करे, कुछ मजा आए, and hopefully the players respond, because I think players are talented, ऐसा नहीं है कि नहीं है। You saw that under Ole as well कि there was a normal squad only. Ronaldo के आने के पहले was a normal squad and he made the best out of them. So hopefully Amorim can do the same. And next 2-3 साल में तो hopefully we'll be there somewhere challenging. Omar Barada ने तो मस्त एकदम वो डाल दिया कि we have to win the title 2000 before क्या a था, year. 2028? 2028 में वही बोल रहा था लास्ट क्वेश्चन कि डू यू थिंक इट विल बी बिफोर 28 या आफ्टर 28? Hopefully, yeah. Hopefully, before United. 28 will be even better. नहीं नहीं, But yeah, उमर बराड़ा ने hopefully. बोल दिया, आई एम होपिंग कि भाई उमर बराड़ा ने टारगेट, बट वो मेरे को अच्छा लगा कि टारगेट सेट किया भाई, देखो टारगेट Yes, है, नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ टारगेट, we तो have to achieve ऐसा it. Yeah. हवे में आंसर नहीं है कि भाई देखेंगे अच्छा होगा। और मेरे को ये नए मैनेजर से लाइक आई एम सुपर सुपर ऑप्टिमिस्टिक। आदित्य मेरे को जानता है पर्सनली, मैं हर मैनेजर में Yeah. एक्साइटेड होता हूँ, हर मैं Same. ये जितने में बोलता हूँ ना, आनी को भी बोलता हूँ कि जितने सपने बेचने मेरे को बेचो, मैं खरीदने वाला हूँ, मैं सबसे पहले एड़ा बन जाता हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों ये मैनेजर को देख के लग रहा है कि नहीं उसमें है करिश्मा है ये वो, तो आई एम तो ऑल इन कि रूबिन एमरन के अंदर जीतेंगे होपफुली जल्दी। बट एनीवेज यार, थैंक यू आदित्य फॉर ज्वाइनिंग अस, इतने रात को तूने ज्वाइन किया, मैच किल करने को टाइम हमको कुछ करने को चाहिए था। आई आस्क्ड आदित्य तूने वीडियो बनाया, डू यू वांट टू कम एंड टॉक विद अस, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। होपफुली आगे और एक कभी आगे जाके और एक जब तू फीचर और वीडियोस बनाएगा, विल टॉक मोर। आई एम श्योर मैंने आज बहुत सारे चीज कवर नहीं किए होंगे, बट जितना हो सकता है मैंने कवर किया। Yes. Yes. And everyone watching, please यार, even if you're watching afterwards, thanks for watching। and अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज जाने के पहले वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे वीडियो का अल्गोरिदम आदित्य से अच्छा कौन जानता है, अल्गोरिदम अच्छा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसे। Yes. हाँ प्लीज लाइक सब्सक्राइब, आदित्य ने बोल दिया तो प्लीज, इफ यू वाचिंग टिल करो नाउ please. प्लीज डू इट एंड होपफुली ट्यून इन टू द चैनल। आज होपफुली जीत जाए यूनाइटेड, तो कल कोई अच्छा वीडियो करेंगे, और होपफुली वीकेंड को भी प्रीव्यू वीडियो के साथ में बहुत जल्दी वापस आएंगे। एनी पार्टिंग वर्ड्स आदित्य और कार्तिक, एनीवन यू वांट टू से एनीथिंग, और शुड आई रैप द वीडियो? From my side, thank you Sunil, thank you Karthik for inviting me, for Thank you. reminding of the old days and all the stories. मजा आता है ये सब बात करने में, because I think lot of people, as you said कि बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि stories क्या थी and how we became friends and all the other videos as well. And I'll love to come back. जब भी तू बोल I'll be back. मतलब अब तो YouTube, as I told you, YouTube पे मुझे बनाना ही है videos every other week or every 15-20 days, upload at least one video. That's the target. So I'll come in whenever you want. I'll be here. एवरी 15 days में वन वीडियो? That is the target. I mean, that is what I want to do. But वो हो नहीं पाता. भाई But yeah, that is what I want to do कि every 20 days at least कुछ एक तो रिलीज करो, छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, but do something. हाँ मैं बोलूंगा यूट्यूब शॉर्ट रिलीज कर दे, बगल करते रहे। अनुज बोल रहा है सुनील का इतना हंसना मैंने स्माइल नहीं देखा है, तो आई थिंक ये सुनने के बाद तो लॉट ऑफ पीपल विल बी स्माइलिंग कि आदित्य रेगुलरली वीडियो बनाने वाला है, तो दैट्स ग्रेट न्यूज यार। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड एंड होपफुली यूनाइटेड परफॉर्मेंस से आदित्य को और ये दे कि भाई अच्छा खेले, जीते तो और मजा है। हाँ तो यूनाइटेड हमको सपोर्ट करे इस चीज में, तो और वीडियोस बनते रहेंगे। चलो यार, दैट्स अ फैंटास्टिक नोट टू रैप अप। तो चलो आदित्य, सी यू होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो। कार्तिक सॉरी मैंने तेरे को आज बोलने ही नहीं दिया, मैं एक्चुअली सोच के आया था कि हम मैच के बारे में बात, मैंने सोचा था थोड़ा आदित्य के बारे में बात करेंगे, थोड़ा मैच के बारे में, बट आदित्य के बारे में बोलने को इतना कुछ है, इतना कुछ स्टोरीज सुनने को था कि मैं मैच के बारे में अब नहीं बात करना चाहता। एवरीवन गो एंड एंजॉय द मैच, होपफुली वी विन एंड होपफुली वी हैव अ गुड वीकेंड। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। चलो बाय बाय।